So can anyone tell me the formula of least square error method, that what is the main formula that we have to focus on and through which we will get the final regression coefficients? Can anyone tell me that formula? Hanji, anyone? So we are discussing here the least square error method. We have covered that in the lectures. I want to know from you that what is the exact formula for finding the regression coefficients? How will we compute that? Isn't that beta hat equal to x transpose x whole inverse into x transpose y? Isn't that the formula? So for getting this, we have to deal with few things. We have to solve for x transpose. We will have to get the inverse. Then we will also have to multiply with the y to get the final beta hat value. That will be our beta hat, which will help us to get the optimized linear regression fit. So I will clear this. So we will be working with the code, but for that we will have to use some data set, right? We have to start with a data set on which we will be implementing this linear regression fit using the least square error method. And for that we have selected the load Boston dataset. So load Boston dataset will be used, which is part of the sklearn datasets. You have to just import that, and once you get that, and if you look into the dataset directly, it is not by default a data frame, but we have to convert that dataset into data frame. So we have used this command df equal to pd dot data frame. This command will help us in generating this dataset into a data frame, and we are letting the code know that we will be working in with the data of Boston dot data, and the column names will be this. So if you are not giving the column names, then it will be just numbering that. So what I will do is I will for now comment these things, and let's see that how does this Boston dataset looks like before we convert that into the data frame. So if I run this command, I'm just doing import of pandas. I'm importing the dataset, and then I'm loading the dataset into the object, and this object will be printed. Let's see how does this dataset looks like. Uh, okay, so it is saying that this also has to be commented. So this is the original dataset in which we have the description of the path in where this dataset is there. The data values in this array, all the values are there in this array, and after that feature names. These are the number of features which I have used in the code above this for the data frame head and column names. This is the file name. This is the target. So these are the output values that we have to deal with, and in the end, uh, okay, so these are the few things that were there. That's all. So what we will do is we will use this Boston dataset, but we will do it in a data frame, and this command pd.dataframe is helping us to convert this object of data into a data frame, which will help us in we can do the operations on the data frame easily, because the pandas is very powerful on the data frame. So we have converted the data set into data frame, and then we are also defining the target value. The target value is Boston dot target. So it is different. I mean, it was the last section of that Boston. Here you could see that target value is different than the array of values, right? So number of values above in the array were the data, which are the first, I guess, 13 columns, 3, 4, 7,
Okay, 34729. Yeah, 13. It's 13. So there are 13 columns of data, but the 14th column will be the target value. So we have appended that in the data frame, and in data frame we can append that easily by using this command df and then the name of the column, uh, and then this target value, and then we are also looking into the first 5 rows of the data set. How does that look? So this is how it looks like. These are the uh, total 14 columns, I guess, and 4, 6, 10, 4, 4, yeah. So this is how it looks like, on which we have to implement the linear regression fitting curve using the least square error method. So this is the data set, and this is all about the import of data and how to convert that into data frame. And we can see that all the values in this data set are numerical, so we can directly implement our this linear regression fitting. Why? Because we don't have to deal with the missing values. There are no missing values. Yes, there are few columns in which there are zeros, we can see, like this one. So there are 5 zeros, but these are the only first 5 rows that we can see, and the original data set might be long. And for that we are also using this command of import missing number as ms, and then ms dot bar. So this will generate a bar graph for the missing values, right? And this missing values graph will show us that there is actually no missing value, and all the columns are 506, 506, 506. So all the columns have full values. There is no missing value in this data set. It is kind of a toy data set. It does not require any kind of preprocessing. It does not require any kind of missing value, replacements or anything like that, just because we are focusing on the linear regression part. But in case you are given an assignment, or maybe you get a question for your evaluation, there might be a case that you have to deal with the missing values also in that. So for now we are having all the values in the data set, and all the values are numerical, so we can also plot the correlation graph. So if you want to plot a correlation graph between all the features, you just have to use this command of SNS heat map, in which you will be telling that yes, we have to focus on the first 13 rows, 13 columns, and you have to generate a correlation map. So we have used dot correlation method on these first 13 columns. Annotation equal to true, because we want the numbers. So all the numbers that are there in this graph, you can see that there are lots of numbers: 1, minus zero point 0.2, 0.41. All of these numbers are only because we have put this annotation equal to true. If we remove this annotation, or if we write false here, all the numbers will be gone, and you have to judge the correlation only on the basis of the color band. So there is a color band on the right hand side. This is telling us that what is the uh, kind of -1 to 1, on a scale of -1 to 1, what is the number of correlation. So it can be judged from the color also. So we have plotted that, and we can see that there are few numbers that are quite above zero point 0.7. So we can see a 0.72 here, 0.76 here, minus 0.75. So there is some kind of similarity. 0.75 or above zero point 0.7 means that there is a good correlation. It is not that, we cannot ignore this kind of a correlation, and we have to work on the optimization in this. So let's see what to do now. So first we will do one thing, that we will be converting our dataset into x and y, because now you have to get that equation right, and that equation of finding the regression coefficients. I will write it again so that you can remember that. So it was beta hat equal to x transpose x whole inverse into x transpose into y, right? So now this y has to be taken from here, right? Here we are getting the y. We have the x. We are doing something for x here at this point, and you have to play with x and y. So this partitioning is very important.
right? And for that, what we are trying to do here is, because we had the total 14 columns, first 13 columns were the independent variables, and the 14th column, that target that we took, so that Boston dot target, that gave us the target value, and we filled this 14th column also. So this is my y, all the first 13 columns are my x, right? And for that we are for that we are trying to do this, x equal to df dot ilog. uh, ilog means index location, so based on the index, we are picking it up. There is a colon here at the place of rows. It means that all the rows are required, and this 0 to 13 means that uh, because there were total 13, so the numbering will be 0 1 2 3 up to 12. So 0 colon 13 means that we are going from 0 to 12. Okay, we have to skip the final this number, we have to not include that. So that's why we can say that this x equal to df dot ilog 0 to 13 is giving us the x part, and the y part is the last column, which is comma 13. So starting from 0, 13 will be the 14th column, right? And this 14th column is my target value, and we are just trying to reshape it, and converting that y values from the data frame into array, because we have to work on a array in this case. So this is only pre-processing of the data and partitioning of data. And after that, now we have to also do one thing more. We have to do the normalization, and for normalization we have to, one second, yeah, for normalization we are going to implement the standard scaler. And for standard scaler we have these commands, sklearn dot preprocessing import standard scaler. Then we will be implementing this standard scaler on the only x part. Now, can anyone tell me that why only x part of the data set is being transformed, and why not y? Only x is being transformed here. Why is not in this normalization part? Why? Can anyone tell me the reason? Anyone out of you? Y को नहीं चाहिए normalization? Anyone? Quickly. Why does this target value does not require any kind of normalization? Why only X part of the data set uh, is being transformed? Any reason? अभिनव, आकांक्षा, इरशाद, बताओ जी, एक्स के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? बोलो अभिनव। सर वाई तो मतलब हमें अपडेट करना ही है, तो वो तो हो ही जा रहा है जब से। एक्स को ही करना है हमें शुरू में तो। वाई को अपडेट करना है मतलब? वाई सर को कैसे अपडेट करना है? वाई तो सर हमारा टारगेट एलिमेंट ही वही है वाई तो। हाँ, मतलब देखो, y इज द प्रिडिक्शन वैल्यू। y तो अपना ये वाला वैल्यू है ना, जो हमने जिसको हमने प्लॉट करना है, जिसके बेसिस पे प्लॉट करना है। जो ये x1 x2 है, इनको तुम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आएगा, लेट्स से अब ये बॉस्टन डेटा सेट है, दिस इज द बॉस्टन डेटा सेट दैट वी आर वर्किंग विद। सो दिस बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट मस्ट हैव few numbers in y which must be based on the price of the house. लेट्स से कि किसी का घर का rate is $100,000, maybe some other house is 150K, right? And I mean, because this is Boston data set, I'm taking the values in dollars. So we do not want to convert the y, we do not want to change the values of y, because in the end we want the prediction in this amount only, right? We do not want to make the prediction in maybe between $1,000 to $1,000। अगर वो $2 लाख का है तो वो $2 लाख ही बताएगा, right? And for that simple reason we are not changing anything in y, we are only focusing on normalization of the x part. And yes, x is the independent variable, but इसका
कोई लेना देना नहीं है for this question. I was only asking that why this normalization is not being done on y, on the target value. It's simply because on x you can do the changes and that will only make your data come on a lower scale. Let's say कि पहले वो 1000 और maybe 1 lakh के बीच में था, right? But after scaling that will be maybe 10 versus 1000. तो आपने क्या किया, आपने उसको स्केल को छोटा कर लिया, आपका पहले वो ग्राफ बहुत बड़ा बन रहा था। एंड ग्राफ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक ग्राफ को छोटा करना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट वी वांट टू मेक द स्केल स्मॉलर सो दैट आवर इक्वेशन सॉल्व्स faster. Equation will be solved faster if it has to search between the space of 1000 versus 10, this 10,000. I mean 1000 into 10 will be total 10,000 values to be searched, right? Versus 1 lakh into 1000 will be 10 to the power of 8 amount of values. So 10 to the power of 4 number of values versus 10 to the power of 8 number of values. अगर आप इस number of values में searching कर रहे हो अपनी, obviously 10 to the power will be faster, right? So that's why we just want to bring our scales to a smaller number. So we are trying to do the standard scaler. This is normalization. We are applying the fit transform function to get the work done on the original data, and we are now changing the name of x into x scaled. अब इसके बाद हम x scaled के ऊपर ही काम करेंगे because we have updated the original data into x scaled version, and so this will help us to get the work done. Okay, so yeah, this is my x scaled, and if I print this x scaled value, it will look something like this. So all my values are you can see that it is quite small, and earlier my x was looking something like this. इसमें 6 भी था, 78 भी था, 242 भी था, 392 भी था. So they were very, I mean, the range of numbers was very high. Minimum number was maybe 0 and it was going up to maybe 396. But now the range will be smaller. अगर आप इसमें min max निकालोगे, you will find that the range is very small, max minus min करके. So that's the difference of scaling. Now after the scaling is done, you have to convert your dataset into train test split. Now listen, you have to do the linear regression fit, right? And for linear regression fitting you have to do some training. अब अगर आपने अपने मॉडल को ट्रेन करना है, लेट्स से ऐसे करके कुछ डॉट्स थे, उसको हमने ऐसे करके ट्रेन करके लाइन लेके आनी है, तो ट्रेन करने के लिए यू हैव टू डू सम इपॉक्स, राइट? यू हैव टू गो थ्रू दिस डाटा अगेन एंड अगेन, एंड मे बी आप नंबर ऑफ इपॉक्स 5 रखते हो, 10 रखते हो, that we will see. I mean, right now I'm not focusing on those epochs. I'm just saying that for that now you have to do that uh, train test split. Train test split क्या था, मैंने आपको बताया था उसमें होल्ड आउट वाले में. Hold out method was that you are keeping 70% of the data in training and 30% of the data in testing randomly. आप क्या कर रहे हो कि आप अपने डेटा में से, लेट्स से 100 रोज थे, उसमें से आपने रैंडमली 70 रोज को ट्रेन में डाल दिया, राइट? एंड बचे हुए 30 विल बी ऑटोमेटिकली मैप टू टेस्ट. सो योर मॉडल विल बी डूइंग द ट्रेनिंग ऑन 70, इट विल गेट इट्स accuracy, the training accuracy on those 70 values, but then it will be tested on those 30 values which were left out. and अगर वो उसके ओरिजिनल वैल्यू के आसपास हुआ एंड उसका एरर बहुत कम हुआ, इसका मतलब वो अच्छा मॉडल है. So that's why we have to do the split, and now it can be done through these things. This is the command from sklearn dot model selection import train test split. So this method you have to remember, train test split, very easy to remember. Now what you have to give here, you have to, I mean, I will come to the left hand side, but on the right hand side we will focus. So you have to call this function and you have to give 4 values: x scaled, y, test size, and random state. Now x scaled and y has to be there. Why? Because आपने अपने data को scale किया था, and those values after being scaled were there in the range of 0 to, let's say, 1 point something, बहुत छोटे number थे versus 390 plus,
numbers. So let's say those were the 13 columns, right? Those 13 columns were there, and then uh, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. Let's say that there are some 13 values and in the end there was this y. Now आपके पास let's say there were 100 rows versus those 14 columns. 13 x में थे और एक y में था. So let's say this was the size. Your data set was 100 into 14. अब इसमें हमने करना क्या है? We have to split our data. टेस्ट साइज इज बीइंग केप्ट टू 0.3. इसका मतलब यही है, सिंपल है, दैट आप अगर टेस्ट को 30% डेटा दे रहे हो तो आप अपने ट्रेन को 70% दे रहे हो, राइट? एंड फॉर दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज यू आर ट्राइंग टू स्प्लिट योर डेटा इनटू 4 पार्ट्स. वो 4 पार्ट्स ये हैं: एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. अभी पहले मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा 70-30 पे. लेट्स से मुझे इसको 70-30 में मैंने इसको बांट दिया. अबव पार्ट इज द 70%, राइट, एंड द लोअर पार्ट इज 30%. अब इसमें मैंने क्या बोला? 70% इज ट्रेन, तो ये ऊपर वाला ट्रेन हो गया और नीचे वाला 30% टेस्ट हो गया. ठीक है. अब ऑब्वियसली ट्रेन का एक्स पार्ट भी है और ट्रेन का वाई पार्ट भी है. सिमिलरली टेस्ट का भी एक्स भी है और वाई भी है. तो वही बात हो रही है यहाँ पे. एक्स ट्रेन का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा. इधर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लूँ. या दिस इज एक्स ट्रेन. ठीक है. और फिर एक्स टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे. दिस इज माई एक्स टेस्ट. एक्स तो है ही है, 13 कॉलम्स तो है ही है, पर वो टेस्ट वाले हैं. उसके बाद वाई ट्रेन. वाई ट्रेन मेरा हो गया क्योंकि मेरा वाई राइट हैंड साइड पे था एंड ट्रेन ऊपर है, तो वाई ट्रेन इज दिस पार्ट. एंड नीचे वाला मेरा हो गया वाई टेस्ट. So these are the 4 partitions that we have done using this train test split command. ठीक है. If you have any doubt in this, you can ask right now, because these 2 lines of train test split and after that ये वाली आपने जो 4 चीजें करी हैं, x train, x test, y train, y test, ये दोनों statements आपको आज के बाद हर लैब में लगाने हैं, because whenever you are applying machine learning, you have to do the data set split. And you will have to get your work done through these 2 commands only. If you have any doubt in this, you can ask right now. हाँ जी, any doubt in this? अभी मैंने अभी मैंने इसकी रैंडम स्टेट की बात नहीं करी, बट मैं करूंगा. इससे पहले अभी तक कोई डाउट है तो बताओ. सर एक बार वाई ट्रेन और वाई टेस्ट का फिर से बता दीजिए. अभी बताता हूँ. देखो, ये मेरा डेटा सेट था. लेट्स से दिस वाज माय डेटा सेट. ठीक है. और उसमें मेरे पास x भी था और y भी था. ये तो क्लियर है ना कि x में कितने भी कॉलम हो सकते हैं. 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं. इस केस में 13 थे हमारे डेटा सेट में. और y तो हमेशा 1 ही होगा. अभी तक हमने मल्टीपल y वाली तो चीज़ नहीं डिस्कस करी और आपके सिलेबस में है भी नहीं. सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन y विद द सिंगल कॉलम. इसका मतलब सिंगल टारगेट वैल्यू है, मल्टी टारगेट नहीं है. तो हमने क्या करा? हमने सबसे पहले तो इसको 70-30 में डिवाइड करा, क्योंकि मेरा जो टेस्ट साइज था वो 0.3 था. मतलब ये कि मुझे पूरे डाटा सेट को, इस पूरी ग्राफ शीट को, इस एक्सेल शीट को, मुझे इसको 70-30 में काटना था, तो मैंने ऐसे काट दिया. ठीक है. ये मेरा ऊपर वाला 70% हो गया, नीचे वाला 30% हो गया, जिसमें मेरे एक्स और वाई मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली हैं. ठीक है. आपस में कनेक्टेड हैं एक्स एंड वाई कॉरेस्पॉन्डिंगली. लेकिन ऊपर का हिस्सा सारा वो 70% वाला हो गया ट्रेन, और नीचे का सारा हिस्सा हो गया टेस्ट. नाउ आपने बोला वाई ट्रेन बता दो. वाई ट्रेन का मतलब है कि पहले तो आप 70% डेटा के ऊपर फोकस करो, मतलब ऊपर का हिस्सा. और वाई का मतलब है सिर्फ ये वाला हिस्सा इधर का. तो वाई ट्रेन इज माई दिस पार्ट, जो ये मैंने अभी हाईलाइट किया है. दिस इज माई वाई ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन भी है और ये वाई भी है. ठीक है. तो ये वाई ट्रेन हो गया. सिमिलरली वाई टेस्ट है. दिस वाई टेस्ट विल बी हाईलाइटेड विद येलो कलर. सो दिस इज माई वाई टेस्ट. वाई भी है और टेस्ट भी है. एनी डाउट इन दिस? वाई टेस्ट येलो है, वाई ट्रेन रेड है. ठीक सर, थैंक यू. ओके. तो आई विल क्लियर दिस. आई होप सबको क्लियर हो गया. बस एक चीज रह गई यहाँ बतानी, रैंडम स्टेट 42. अब देखो क्या होता है यार, मतलब वी हैव रिटन हेयर टेस्ट साइज 0.3,
अब टेस्ट साइज 0.3 का मतलब है कि आप 30% रैंडमली ले लो, ठीक है, डेटा सेट को रैंडमली 30% हिस्से को आप टेस्ट में बांट लो, बचा हुआ 70% आपका ट्रेन हो जाएगा, मान लिया जी। लेकिन रैंडमली का मतलब तो होता है कि फिर रैंडमली होगा सब कुछ। इसका मतलब ये हुआ दैट लेट्स से दैट वी आर 10 पीपल हियर राइट नाउ, तो उन 10 पीपल में अगर आप ये कमांड रन करोगे तो ऑल ऑफ दोज 10 पीपल विल गेट डिफरेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहां तक अपना मॉडल रन करोगे इस स्टेटमेंट तक, अगर आप रैंडम स्टेट नहीं दे रहे, अगर आप ये चीज दे ही नहीं रहे, then if you run command only till this point, all of us will get different set of x train x test, y train y test. Why? Because किसी के लिए 1 के बाद 3 4 5 सिलेक्ट हो गया और दूसरे बंदे के लिए स्टार्टिंग ही 2 से हुई है और वो 4 7 10 ऐसे करके सिलेक्ट कर रहा है, मतलब किसी का भी सीक्वेंस सेम नहीं होगा। बट टू मेक द सीक्वेंस सेम, वी आर राइटिंग द रैंडम स्टेट 42 कि भाई if you are running this command with random state 42 versus I am running this command with random state 42, this random state will act as a seed value and which is being constant for all of us। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में this 30% will be common for all of us। मतलब ये that if you are running this random state 42 alongside me, uh, the exact value which this x train you have, let's say you have to print the x train first 5 rows, जो आपके फर्स्ट 5 रोज होंगे और मेरे होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, दिस विल बी एग्जैक्टली सेम। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ अस वी आर इम्प्लीमेंटिंग रैंडम स्टेट 42, मतलब हमने एक कांस्टेंट नंबर दे दिया कि यार इसी के हिसाब से दो। अब 42 एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैक्सिमम लोग इन मशीन लर्निंग कम्युनिटी यूज दिस नंबर 42, बट दिस 42 कैन बी 43, कैन बी 100, कैन बी 1000। ये आपके ऊपर है कि आपको नंबर कौन सा पसंद है, आप रैंडम स्टेट सीड वैल्यू आप वो रख लो, ठीक है। बट when let's say that we are implementing a lab assignment and or maybe I am taking your lab evaluation, so in that case if I am giving you that given the random state as 1, तो random state 1 के हिसाब से you are getting some solution and based on that maybe I am asking you कि ये end में दो वैल्यू क्या आ रहे हैं, तो उस केस में आपको random state 1 के साथ ही काम करना पड़ेगा so that आपका जो ये आखिरी के दो नंबर आ रहे हैं वो exactly सेम आए और आप वही मेरे को सबमिट करो तो आपका आंसर ठीक आए, ठीक है। अगर आपने इसको 1 को चेंज किया तो आपके ये वाले दोनों आखिरी वाले आंसर चेंज हो जाएंगे एंड दैट विल अफेक्ट योर मार्क्स इन दैट केस। तो उस केस में रैंडम स्टेट की वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई वी हैव टू गेट द सेम आंसर, तो रैंडम स्टेट क्या हेल्प करता है, वो ये करता था। Now moving ahead, so after doing this random selection and we have done the partitioning, हमने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। and one more thing, आप अगर इन चारों के नाम को एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, अगर आप इसको ए बी सी डी भी लिख दोगे यहाँ पे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा ए एक्स ट्रेन था और बी मेरा एक्स टेस्ट था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी ने गलती से ये टाइप कर दिया दैट यू हैव रिटन वाई ट्रेन फर्स्ट एंड देन एक्स टेस्ट, तो आपका वाई ट्रेन जो होगा वो वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाला काम करेगा, मतलब वो लोकेशन बेस्ड वैल्यू मिलती है इनको। तो जो ये मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है दैट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लोकेशन कि आप कौन से लोकेशन में कौन सा वेरिएबल डाल रहे हो। तो अगर आपने इन इन दो नामों को आगे पीछे कर दिया देन योर वाई ट्रेन विल बिहेव लाइक एक्स टेस्ट, देन यू माइट गेट सम एरर according to what you want to print or what you want to do the prediction। but अगर आपका ये सीक्वेंस ठीक है then these four things will behave in perfect way, right? And remember this thing that this can be any name, it can be abcd, it can be dcba, it can be x train y train x test y test, irrespective of any name, the sequence of the this exact sequence will be very particular and this is the exact sequence that this train test split follows। तो आपको ये अगर सीक्वेंस याद होगी तो इट माइट fetch you a good maybe 1 mark in quiz अगर आपको ये कहीं पूछा गया and you can recall that yes this is the exact sequence and you are not getting confused कि भाई x train y train x test y test है कि x train x test y train y test है, तो वहां पे वो एक नंबर आपका क्विज का ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर
this sequence, और इतना tough भी नहीं है. So yeah, that's all. And after that, if you print the shape, now shape means when you have done the done the partitioning, now what is the exact shape of that uh, final thing that that you are trying to solve. So now your xtrain dot shape and xtest dot shape will be giving you this 354 comma 14. So when we were studying and we were saying that we have to get the data into matrices, उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर आपके दो वैल्यूज थे लेट्स से 7 एंड 35, तो हमने उसको 1 7 एंड 35 लिखा था. सो वी आर इंसर्टिंग दिस वन, आई मीन this statement is inserting 1 in front of all the rows of x, and that's why the size of x has improved from 13 to 14. So I mean, yeah, that was the reason I got confused a bit. Yeah, so fine. So these are the 14 values, including that one for x, and I mean that 14 columns is consistent for x train and x test, and after that y10 and y test are the values that were in the target column. So after that, now we have to calculate the beta value, and for that beta value we have to I mean I have already told you equation twice thrice. So you have to do this x transpose x whole inverse into x transpose into y. So that's being done here. You can see here in the code that we are doing x transpose, and then we are multiplying it with again x, right? So this is the internal part, this is a, and when we are doing the inverse, this is b, so including the inverse it will be b. And if we multiply b by x transpose, so yeah, I mean b into dot product of x transpose, this whole of this is c, and in the end into y, I mean you are multiplying c with the dot product of y train, it is y only. So this is my final beta value. So this simple formula is being solved by using this abc beta print beta. So these are the 5 statements that help us in getting this beta value. And I mean you have to remember this formula if you want to implement this LSE based linear regression. So this is how you are getting the beta. 1 second. Yeah. So this is how the beta is coming, and these are the values. Total आपके पास beta कितने हैं? If you count this, this is 5, 5, and 4. There are 14 betas. Can anyone tell me that why this beta number is 14? This has been discussed in class. यहाँ पे beta हमारे, अगर beta का हम count देखें, it is 14. Why? X में तो हमारे पास 13 कॉलम थे. और हमने तो यही बात करी थी क्लास में भी, that if let's say that there are I mean there is one y and one x, तो अगर आपका चलो x1 x2 अगर दो x भी हैं and you have to solve it, तो आपकी जो equation बनेगी that will be y hat equal to uh, it was beta naught plus beta 1 x1 and beta 2 x2, something like that was there. So if you remember correctly, there is this y-intercept value, and because of that y-intercept value, one additional beta value is there. So even if your x had 13 columns, this beta technique has the 14 values including the intercept value. So that's why number of beta values have to be the number of columns in x plus 1. So here we have 14 betas, and after that when you do the prediction, it can be simply done by doing this prediction of x test into dot product of beta, and for that you are now generating your y predictions, and your y predictions are a array now. Can anyone tell me that y prediction is a array y? अगर आप यहाँ पे y predict को print करवाओगे, your y predict is a array. Can anyone tell me what does this array mean here?
this full column, this full array, can anyone tell me कि ये 152 वैल्यूज क्या हैं? सर टारगेट होंगी ये। टारगेट तो हमने y को बोला है, तो ये तो y प्रिडिक्शन है। ठीक कह रहे हो आप, बोलो। देखो y हमारा ओरिजिनल ये था, हमने ऊपर y को दो हिस्सों में बांटा था, y ट्रेन एंड y टेस्ट। यस और नो? यस सर। तो जो यस। हमारा y टेस्ट था ना, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू था, और जो यहाँ पे हमारा अब आउटपुट आया है y प्रिडिक्ट, दिस इज माय y हैट। तो y हैट वर्सेस y टेस्ट, अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्टली सेम है। अगर 152 में से, लेट्स से, चलो ये तो क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये नंबर ही हमारे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, दीज आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ये क्लासेस होती, लेट्स से क्लास 1 to 10 प्रिडिक्शन करना होता, तो वो किसी ने 1 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला, किसी ने 5 बोला है, तो ऐसे करके 152 टाइम्स होते, इधर भी और इधर भी। तो हम ये मैच करते कि कितनी बार वो आंसर एग्जैक्टली सेम आया है, कि वाई हैट ने भी 1 बोला और वाई टेस्ट में भी 1 था, तो ये 100% एक्यूरेसी सेम होगी इसमें। अगर मेरे दूसरे केस में यहाँ पे 2 था और इधर 1 था, तो ये मेरा गलत हो जाता। तो हम ये काउंट करते कि क्या पता मेरे 152 में से 150 मेरे बिल्कुल सही थे, 2 गलत थे, तो वहां पे हम बोलते कि हाँ यार इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हम बोल देते कि लेट्स से 99% एक्यूरेसी है जी इसकी मॉडल की। तो ये तो होता क्लासिफिकेशन में, बट नाउ आवर प्रॉब्लम इज विद रिग्रेशन, हम तो रिग्रेशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ओके वी हैव गॉट द वैल्यूज इन वाई प्रेडिक्शन एंड ऑल द वैल्यूज आर 152। 152 है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन अबव, यहाँ पे हमारा जो वाई टेस्ट था वो 152 था, जो हमने प्रिडिक्शन करा है वो भी एक सेकेंड, अब मेरा जो प्रिडिक्शन आया वो एक्स टेस्ट के ऊपर आया है, एक्स टेस्ट वाला जो पार्ट था उसके बेसिस पे हमने उसको डॉट प्रोडक्ट करवाया बीटा के साथ, एंड वी हैव गॉट द वैल्यूज जिससे हमें ये मिल गए सारे वैल्यू 152। एंड नाउ अगर हमने, ठीक है काउंट नहीं करना, तो हम उसकी लेंथ प्रिडिक्ट करवा लेते हैं, लेंथ प्रिडिक्शन, लेंथ प्रिंट करा लेते हैं, एंड दैट इज 152। सो नाउ वी हैव टू चेक द एरर, और एरर चेक करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, अब इसमें आई हैव टू डिस्कस दिस थिंग इन द लेक्चर, बट यहाँ पे अब आ ही गए हैं तो आई विल डिस्कस दीज 1 or 2 थिंग्स। in fact you already know that how to calculate the mean square error। मैंने आपको उस दिन क्लास में भी बताया था कि आप मीन स्क्वायर एरर कैसे निकालोगे, एंड इट इज क्वाइट सिंपल। अब देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है, वी आर एक्चुअली डूइंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरेज, वाई टेस्ट माइनस वाई प्रिडिक्ट, ये अपने आप में दोनों एरे हैं, और दो एरेज का सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक एरे ही देगा। ठीक है, तो वाई टेस्ट माइनस वाई प्रिडिक्ट इज गिविंग अस द एरर एरे, एंड देन दैट एरर हैज टू बी स्क्वायर्ड बाय, कैन एनीवन टेल मी कि हमने उसको स्क्वायर क्यों किया था एरर को? क्लास में डिस्कस हुआ था ये। Why do we need to square the error? सर अगर कोई नेगेटिव साइन होगा तो वो हट जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अब देखो, मतलब एक मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था दैट, याद आ जाएगा जिसने भी लेक्चर अटेंड करा, इरशाद ने तो किया था। सो लेट्स से दैट वी वर प्रिडिक्टिंग कि किसी का घर का रेट है 70 लाख रुपए, और हमने जब उसको प्रिडिक्ट करवाया तो उसका प्रिडिक्शन में 68 लाख आया, तो वो 2 लाख कम आया, राइट? तो इस केस में एरर कितना हुआ, 60 - 70 - 68, इट इज 2 लाख रुपीज का गैप। लेकिन अगर हमारी प्रिडिक्शन में 72 लाख का आ जाता, ठीक है, तो दैट एरर वुड हैव बीन -2 लाख। तो हम इन एरर्स को स्क्वायर करके एक तरह का बराबर लेके आ रहे हैं, सेम स्केल पे लेके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द स्क्वायर ऑफ द एरर्स, ठीक है, ताकि वो जो नेगेटिव वैल्यू आनी थी वो चली जाए। इंस्टेड वी आर ब्रिंगिंग दीज टू एरर्स, क्योंकि एरर तो दो का ही है, 2 लाख रुपए का फर्क है, तो अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों का आंसर 4 4 आ जाएगा, तो नियरली, मतलब नियरली क्या, इट इज एक्चुअली सेम एरर, कि 2 लाख का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन
मेक यू अंडरस्टैंड कि हम उसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं. एंड देन सम स्क्वायर एरर इक्वल टू np डॉट सम स्क्वायर एरर. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज नाउ वी वांट टू फाइंड द मीन स्क्वायर एरर. अब मीन करने के लिए भाई सारे एरर्स को सम भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वो वैल्यूज भी करना पड़ेगा. तो इट इज क्वाइट सिंपल. मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला आई होप इट इज वेरी क्लियर और सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है. तो वी आर प्रिंटिंग मीन स्क्वायर एरर हेयर and mean square error is coming out to be 21.51. Now because we have done the standard scaling and everything and we are trying to do the prediction here, तो वैसे तो स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि in the end we are predicting the y value and we did not scale our y values, so that y value पे आपका जो एरर आया है दैट इज 21.51. नाउ दिस इज ए मीन स्क्वायर एरर. तो आपने हर एरर को स्क्वायर किया था, तो 21.5 को अगर आप स्क्वायर रूट करोगे इट विल बी अराउंड 4.5. तो आपका जो एरर आ रहा है आपकी वैल्यूज में 4.5 वैल्यूज का ऊपर नीचे का आ रहा है. ठीक है, 4.5 वैल्यूज का ऊपर नीचे हो रहा है. एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर द रूट मीन स्क्वायर एरर. यू हैव टू डू सिंपली द स्क्वायर रूट. ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे MSC का तो 4.63, मतलब जो मैं आपको कह रहा था वो 4.5, वो इट इज 4.63. सो रूट मीन स्क्वायर एरर इज द स्क्वायर रूट ऑफ MSC, तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आर स्क्वायर वैल्यू, आर स्क्वायर इज वन ऑफ द टेक्निक टू गेट द, आई मीन it is one of the way to see कि भाई error कितना है. MSE was quite simple, RMSE was quite simple, and now let's see what is R square value. So in this you have to find two things. You have to find the mean value, you have to find the variance, and then you have to do this thing 1 minus sum square error divided by total variance. So I mean sum square error तो हमने ऊपर कैलकुलेट करा ही था. This was the sum square error, right? And this sum square error is being used in this R square value formula, and this is the formula. You can find the mean by using this np dot mean. You can find the variance by doing this thing np dot sum with the error को square करके. ठीक है, total variance भी आ जाएगा, and then 1 minus sum square divided by total variance, and this is the R square value. तो जब आप इसको print कराओगे, this is the 0.71 R square value. This is one of the evaluation metric for regression. So I will be taking a lecture on this thing, and we will be discussing multiple types of evaluation metrics of regression, maybe in 1 or 2 lectures. So 21.5 is the mean square error, RMS is 4.63, R square is 0.71, and there are other values also. We will look into that when we will reach that stage in our class. So that was all about least square error method, and I will be discussing the ridge and lasso in the next lab. If you have any doubt you can ask in this, and if you don't have any doubt, and then I will move to the gradient descent optimization. LSE and GDO, these were the two methods that were discussed by me in the class, so I wanted to cover these two practically also. So yeah, any doubt in this? Yeah, so in this gradient descent optimization, we will be using the USA housing prediction dataset. It is available on Kaggle. I will share this link in the chat box. You can click on this download button here and download the dataset. It will be downloaded in a archive.zip file. You can unzip that. You can get this CSV file, and then you can drag and drop that it in the file section here. I have already done that for myself, but आप यहाँ file section में जब आओगे तो आपका यहाँ पे सिर्फ सैम्पल डाटा नाम का फोल्डर होगा, एंड देन यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दैट CSV file here and it will be added, so that you can directly use that CSV file here in the code. So gradient descent optimization. Now gradient descent optimization बताओ जी क्या होता है? What do we do in this? Anyone? सर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है. कैसे करता है? Any idea? Can you explain? Can you give a idea? थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर लो उसका. What is cost function?
सो बेसिकली जो कोफिशिएंट एक तरीके से जो हम मैथमेटिकल उसमें जो कोफिशिएंट पढ़ते हैं वो कॉस्ट फंक्शन होता है। हम्म, कॉस्ट फंक्शन होता है, ठीक है, पर कॉस्ट फंक्शन में इसमें ग्रेडिएंट डिसेंट में करते क्या हैं हम, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? पढ़ा हुआ है आपने? यस सर, बस मतलब बेसिक्स पढ़े हुए थे। हम्म, करना क्यों है? लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड में अपना काम क्या हुआ नहीं था? उसमें क्या कमी थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ी? हाँ जी, why do we need gradient descent optimization? So to find the local minimum of differentiable function, Local or global? local. To find the local minima, okay. And why not global? लोकल तो वो कहीं पे भी स्टक हो सकता है, if there are multiple minimas in the same data set, it can get stuck in a local minima and it will not give the best result, but the target of gradient descent optimization is to reach the global minima. यही तो था, we Yes, sir. discussed that, right? तो मतलब देखो, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा, इन द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एरर, ठीक है? वी वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एरर दैट इज देयर व्हाइल डूइंग द प्रेडिक्शन. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क एंड लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन के उसमें करना क्या है. सो आई होप दैट यू पीपल हैव गॉट दिस लिंक, right? You can get the link from the chat box. I have already posted that. You can get the data set from the download button here and you can unzip that. So after doing everything, after adding the CSV file here, you have to do the coding. So for this, we have to first import the NumPy and pandas, and then we have to import the dataset, and we are also printing the first 5 rows by using the df.head. So the first 5 rows are giving me some values. I can see that, okay, there is this average area income, average area house age, average area number of rooms, average area number of bedrooms, area population, price, and then this address. Now obviously I don't need this address, right? I mean, हमें क्या फर्क पड़ता है? We have to do the only prediction of this price, house price. We don't want this address right now. It is of no use for us. So what we will do is we will maybe remove this column as it is. हम इस वाले पूरे column को drop कर देंगे and we will work on these first 6 columns, out of which we will be saying that these first 5 are my x, this price is my y, and उसके बाद हम partitioning करेंगे. Let's see what to do. So for now, uh, after looking into the head of these first 5 rows, we can say that we have to drop this is the 7th column. Okay, so let's see what to do now. In fact, ड्रॉप भी क्यों करना, उसको हम सिर्फ उसको पिक ही नहीं करवाएंगे. तो वी हैव डन दिस. सो इन द एडीए पार्ट we have given this x the value of first 5 columns, right? And these first 5 columns have been printed for the first 5 rows using the x dot head. So by using this command you have got the x and you can see that के भाई अपने पास पहले 5 column आ चुके हैं in x. Now what about y? Y has to be the that 6th column, कॉमा 5. हमने उसको डायरेक्टली 5 कर दिया कि भाई वो 0 से शुरू करेगा, 5 वाला अपने आप 6वां उठा लेगा. एंड देन वी आर आल्सो कन्वर्टिंग दैट इनटू एरे. सो दिस इज द एरे. ये डाटा फ्रेम नहीं है. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपना डाटा फ्रेम था, ठीक है? डाटा फ्रेम ही था x, बट y इज नॉट अ डाटा फ्रेम बिकॉज वी डोंट वांट y टू बी डाटा फ्रेम. वी वांट टू इन द एंड हमें वो जो एरे माइनस एरे करके डिफरेंस निकाला था वो तभी निकलेगा अगर हम इसको एरे में कन्वर्ट करके रखेंगे अपने पास. सो दिस इज माय y. After that now you have to do the standard normalization. वही सेम सब कुछ, ठीक है? You have to do it on x. You have to get the x scaled values. आप उसको प्रिंट करवा लोगे तो you will get this x scaled value as this. Originally कुछ था, अब कुछ और बन गया. Now you have to do the train test split. यहाँ तक तो भाई exactly सब कुछ सेम था.
The way we did in least square error method, everything was same till now. You have done the train test split, same वैसे ही 30% test में 70% training में. Now the game begins. You have to uh, solve few things for gradient descent optimization, and for that you have to calculate the beta vector, and beta को हम initially 0 कर लेंगे, np dot zeros, ठीक है, with 6 values. Why 6? Because there are 5 columns. ठीक है, यहाँ पे अपने पास 5 कॉलम थे, तो 5 कॉलम का तो आएगा ही, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए बीटा नॉट. तो total will be 6, so that's why total 6 values are there in beta 0. Number of iteration 1000 के लिए चलाएंगे. learning rate 0.01. This is the alpha. If you remember the formula, आपको वहाँ पे याद होगा, when we have to update the beta value, it has to be beta minus alpha into changing rate. वो df by वो जो हम करते थे dj by dx वाला हम जो करते थे, वो जो changing वाला था, तो वो हम उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते थे चेंजिंग रेट को, एंड देन n इक्वल टू 5. ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव कंसीडर्ड इनिशियली. नाउ यू हैव टू डू द इटरेशंस. हमने इटरेशंस यहाँ पे 1000 रखे हैं, तो यू हैव टू गिव द इनिशियल ग्रेडियंट वैल्यूज टू बी 0, x0 x1 x2 सबका ग्रेडियंट हमने इनिशियली 0 ले लिया. देन वी आर ऑल्सो getting the values of this a b c d e f. A b c d e f are the what are they? We are trying to update our values of gradients, और उसमें हम कर क्या रहे हैं, बीटा नॉट इंटू बीटा 1 इंटू ए, मतलब प्लस कर रहे हैं, प्लस बीटा 2 इंटू बी प्लस बीटा 3 इंटू सी. सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू सॉल्व इन द, I mean, we got the differentiation result in the class, that yes we have to solve it, और एक general equation बनी थी, and after that, I mean, according to that general equation, these were the few steps that were needed to be done. So what we are trying to do here is, जो हमारा x train है, the first 5 columns जो हमने अलग से किए थे, उसमें से हमने values उठाए हैं, and in that we are picking the value. Now because there are number of iterations, so for each iteration, I mean in this also there is this length of x train. So let's say that in x train there were, let's say 1000 rows, तो वो हर रो के लिए कर रहा है, हर रो में जा रहा है 0 से लेके 4 तक. वो क्या कर रहा है, 0 से 4 का मतलब है, it is very simple that all the 5 values are being picked one by one. ठीक है, 0 to 4 का मतलब यहाँ पे ये है, एंड वो हर वैल्यू को उठा के ए बी सी डी ई की वैल्यू दे रहा है, एंड देन एफ इज योर वाई. ठीक है, तो वो कर क्या रहा है, आपके ओरिजिनल डाटा सेट को उसने बांट दिया है इन ए बी सी डी ई एफ, एंड देन इट इज अपडेटिंग द ग्रेडियंट वैल्यू बाय यूजिंग दिस. और मतलब उसको एक्स ग्रेडियंट तो उसका मिल गया सबका. देन बीटा वैल्यू का तो वो है ही है, दैट यू हैव टू अपडेट ईच बीटा वैल्यू, बीटा माइनस लर्निंग रेट into the changing rate जो हमारा था formula. So that is divided by n and into the gradient. So yeah, I mean this is the simplified form. अगर आप equation जाके देखोगे in the lectures or the slides, you will find that, I mean, this code is actually matching that exact thing that was taught in the class. So these are the few steps. करना कुछ भी नहीं है, मतलब it is very simple. Now obviously this has a drawback, and this, I mean, this code is a bit not the best way to do it, because in this you have only 5 columns. Let's say there were 5000 columns, then you cannot do this 5000 times, right? I mean, you have to find a way, that will be your job to improve the code, but this is the most basic way that I could think of, and we can make the thing simple. So in this we have made the initial gradients as 0, then we have picked all the values from each rows, and for, I mean, for your full x-train data set, you have to do these 3 things. You have to pick the value, and then you have to update the gradients, and then you have to update the beta values. So these 3 things were to be done, and then your final beta will be calculated once your loop is complete. So after you print this beta, you will get these values. These are the 6 beta values. We had the 6 beta values, so these are the 6 beta values which are being calculated. तो आपको इन बीटा वैल्यूज को यूज करके प्रेडिक्शन देना है. आगे का तो it is exactly same that we did earlier.
So you have this beta value, you can reshape that, you can get the shape, it is 6,1. Then you can do the prediction. प्रिडिक्शन से आपको प्रिडिक्शन जो आपने करी थी वाई प्रिडिक्ट, आपने उसकी शेप भी देख ली, इट इज 1500,1. तो you can now find the, I mean you can see the values of y predict also, you can print that by using this y predict, but then you have to do the calculation कि हमारा कितना accurate है कितना नहीं. So you have to get the errors. Now mean square error हमने calculate किया same way. Y test was the original value, y prediction was the prediction value. आपने दो एरर्स को माइनस किया, एरर आया, स्क्वायर एरर को स्क्वायर किया, सम ऑफ स्क्वायर किया, एंड देन मीन. So this was the mean value, 9.8 into 10 to the power 20. It is very big difference, right? And then you can find the RMSE. अगर आप उसका root mean square error भी कर रहे हो, it is still a very big number because this was 9 into 10 to the power 20. That was a very big number. After that, you are getting the RMSE value, and you are also getting the adjusted R square. So we will be discussing about these R square and adjusted R square, and I mean with along with the RMSE and MSE, and in fact there is this absolute mean square error also. So there are many type of errors. Mean absolute error is there. So there are multiple types of errors. We will be discussing that in the detail. But for now, this was the main thing. I mean, only this part of the code is new. Otherwise, all the things that we did before that or after that, that was similar to the LSE. And this can only be understood if you know the lecture, if you know the slides, then you will be able to understand this code very easily. I mean, we have done nothing. It is very simple. We are just updating the gradient value, the x gradients, and then we are updating the beta values, and that's how we are getting the predictions, because we have to multiply the beta value with the original data set that was x test that we had kept aside. So this is how we do the gradient descent optimization. And I mean, based on this, we have got the error like this. I mean, you can try, I mean, using the same data set, you can do one thing. Now it's on you that if you want to use the same data set, USA housing say you are getting the what we say, mean square error as this 9.8 into e to the power 20 into 10 to the power 20. And same thing if you do on this USA housing data set instead of load Boston, अगर आप उसी वाले डेटा सेट पे लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड वाला भी यूज कर लोगे, if you use these updated values that we got here, these beta values that we got here. So अगर आप इस टेक्निक से करोगे, then you can compare these two के इन दोनों में से कौन सा टेक्निक बेटर है कौन सा नहीं. तो that's the difference, and that's why we need multiple types of optimization methods, because we sometimes we do not get the best results only based on the single optimization algorithm. So that's why we need multiple types of algorithms. यहाँ पे हमने सिर्फ दो पढ़े हैं, but there are others. I mean, there are hundreds of different optimization methods through which you can do these kind of predictions in regression also. If you have a doubt, you can ask now. Any doubt? No, sir. Okay.